एक ध्यान देके एक खुद से पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लग रहा है तो चलो 1 घंटे का थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं ऑनलाइन तरीके से, एक एनर्जेटिक टीचर से। वो चाहते हैं वही बच्चों का हो, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि कोई 40% का है कि कोई 59% का और कौन 90% का है। सब में कैपेबिलिटी है, मिसिंग है विल पावर, मिसिंग है घर में पढ़ाई लिखाई का संस्कार, मिसिंग है बच्चों में एक इच्छा शक्ति कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आज आपको मालूम है पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। आज हम में रतन टाटा जी नहीं रहे। रतन टाटा जी इंजीनियर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे। और उनमें अगर सही मायने में कोई क्वालिटीज़ थी तो फर्स्ट थी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी व्यवहार के मामले में नहीं, जिंदगी के मामले में है। वो हार्ड वर्किंग थे, हाँ ऑनेस्ट थे, सिंसियर थे। ऑफिस का उनका जाना या ऑफिस की मीटिंग का उनका प्रेजेंस, उनका कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में जब आप पढ़े होंगे तो इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो समझेगा एक सिंसियर डेडिकेटेड हार्डवर्किंग आदमी एजुकेशन के किसी भी फील्ड में हो या ज़िंदगी के किसी भी आयाम में खड़ा रहे, वो अपना इंप्रेशन बनाता ही है और दुनिया के लिए मिसाल बनता है। तो उनकी मेमोरी में ही सही आज से हम सोचे कि हम अपने लिए, देश के लिए और मानवता के लिए कुछ करने के लिए पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। तो हमारे टीचर्स की टीम में मैं रहूँगा, ऑफलाइन के लिए तो मैं ही रहूँगा मतलब आपको मैं दिखूँगा। फिर वैशाली मैडम पढ़ाएंगी आपको। आज का पहला लेक्चर शंकर सर लेंगे, जो खुद BE इलेक्ट्रॉनिक्स है, MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। और सर की एक खासियत है, हमने जब से ऑनलाइन शुरू किया है सर इतने पैशनेट हैं कि आज भी उनका जॉब टाइमिंग रहता है शाम के 6:15 से 6 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक। तो आज उनकी छुट्टी है तो भी उन्होंने बोला सर मैं आपका पहला लेक्चर है, आई विल ऑनर यूर रिक्वेस्ट। और उन्होंने हाँ बोला। पर ये सर जिनके बारे में अच्छा बोलूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप से कभी भी उनके बारे में अच्छा बुरा कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी फीडबैक बुरा नहीं होता है, ये इम्प्रूवमेंट के लिए चांस होता है। और हमारे सारे टीचर्स में ये समझने की क्षमता है। शंकर साहब MTech है, मंगलम सर जो अभी भोपाल में मास्टर्स कर रहे हैं IIF में, वो भी हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर तनुजा मैडम हैं जो हमसे जुड़ेंगी केमिस्ट्री के लिए, जो जिनकी खुद की किताबें हैं मार्केट में। तो आप देख सकते हो डॉक्टर तनुजा के, मैं जानबूझ के पब्लिकेशन वगैरह का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब लोग बहुत ही हम्बल हैं और वो नहीं चाहेंगे कि बेवजह मैं उनकी पब्लिसिटी करूँ। एक विवेक पारकर सर है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, फिजिक्स डिसिप्लिन से डॉक्टर विवेक पारकर मेरे कलीग हैं BRC के, और मेरे इस एफर्ट्स के लिए हमेशा ही पॉजिटिव माइंडेड रहते। वो आपकी फिजिक्स की फ्लोर संभालेंगे। आरती मैडम बायोलॉजी केमिस्ट्री संभालेंगी, PhD की थीसिस उनकी ऑलमोस्ट सबमिट हो चुकी है। लॉ प्रकाश सर IIT कानपुर से हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर चुके हैं और अभी एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व है। राजीव सर बिहार से है, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है। वर्षा मैडम MSc माइक्रोबायोलॉजी है। विशाखा मैडम MSc केमिस्ट्री और इंडस्ट्री में उनका तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है। लीना मैडम एकेडमिक्स में है। ये सारे जो मास्टर्स MTech वाले लोगों में मैं आपको सिर्फ एक BTech और BRC वाला मिलूँगा, BRC का दूसरा व्यक्ति मिलूँगा। बट ये मेरी आइडिया है तो लोगों को बहुत अप्रिसिएशन रहता है, बट इस अप्रिसिएशन में आप कभी मत भूलिए जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मेरे से कई गुना ज़्यादा है। इनडिसिप्लिन, बदतमीजी या आपका बेवजह उनको मैसेज करना, ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाए। तो उद्देश्य बता के मैंने आपके 10 मिनट लिए, बट ये ज़रूरी था और इस तरीके की बातों को भी ज़रूरत है। आप मुझसे बात कर सकते हो मैसेज से, सारे मैसेज मुझे ही होंगे व्हाट्सएप से, नेवर कॉलिंग, और इसमें आप आपकी ज़रूरतें पेश कर सकते हो। मेरे से जितना होगा उतना मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जस्टिस देने की कोशिश करूँ और आपको इसके लिए सिंसियर एफर्ट्स डालने के लिए प्रेरित भी करूँ। लेक्चर के लिए सिर्फ आपको बैठने की ज़रूरत नहीं, आपके घर के यंगस्टर्स से लेके सीनियर्स से लेके फैमिली मेम्बर्स, मम्मी डैडी भी बैठ सकते हैं, ताकि आप खुद मोबाइल पे सिर्फ लेक्चर सुने और अगले 1 साल, मतलब फर्स्ट टारगेट इज़ 2025 का ये सारा एग्ज़ाम, नेक्स्ट टारगेट इज़ 2026। तो मतलब जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के हैं, तो इस तरीके से उनको ये जो डेली 1 घंटे का पढ़ाई मिलेगा, डेली नहीं बोल सकते, जितने सब्जेक्ट है उतने। तो और ये भी आप जान लीजिए अभी हम फुल फ्लेज स्पीड में नहीं आ रहे। हम अक्टूबर जब आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम सर पे है तो इस दरमियान हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ट्रायल बेसिस पे चलता रहेगा। आपके मैसेजिंग मोड, आपका माइक सब ऑफ रहेगा।
ये अगले एक महीने में जिस बच्चे ने सिंसियरली प्रेजेंस रेगुलरली दिखाया उन बच्चों के माइक उनके मैसेजिंग मोड ऑन किए जाएंगे और उनको एक मॉनिटर की तरह क्लास की जिम्मेदारी दी जाएगी। और कोई इस तरीके के सिंसियर बच्चे हैं तो उनको सचमुच बोलता हूँ मैं, कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉलेज करिए और हमारा ऑनलाइन क्लास करिए और गारंटी है कि ये क्लास आपके लिए फ्री रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते। तो और इसके लिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह की भी कुछ ज़रूरत हो तो उसके समझ में प्रॉब्लम है तो उसका भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ लेक्चर्स चलेंगे इस हफ्ते, अगले हफ्ते और दिवाली तक। एक तो इक्का दुक्का दिवाली की छुट्टी शुरू होते ही ये ऑनलाइन मोड है, मामा के यहाँ चाचा के यहाँ कहीं तिरुपति या कहीं भी आप गए हो घूमने फिरने या आप कश्मीर में भी गए हो तो भी आप ऑनलाइन लेक्चर शाम का 1 घंटे का कर सकते हो। तो नवंबर की शुरुआत से ये रेगुलर एक्टिविटी अच्छे से शुरू होगी। तब तक आज से आपकी सिंसियरिटी तब तक रहेगी तो यू विल गेट दी एक्स्ट्रा एबिलिटी। अभी मैं इतना बोल के ही रुकता हूँ और शंकर सर को ये हैंड ओवर करता हूँ कि वो शुरू करें। आप पहले 10-15 लेक्चर, फिर वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, किसी का इसमें ज़रूर समझिए। आपको अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं या इवन 11वीं के हो, मराठी मीडियम को या उर्दू मीडियम के हो, आपको ये सारा बाउंसर लगे। बट ये बिल्कुल मत भूलिए जो चीज़ें पहले बाउंसर लगती है कुछ चीज़ों में उस पर ही हेलीकॉप्टर शॉट खेला जा सकता है। तो भाई ये आपके स्किल पे है कि आप किस तरीके से। मैं तो इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 पहले 10-15 लेक्चर मतलब हर सब्जेक्ट के 2-3 लेक्चर सिर्फ बैठ के अटेंड करें। एंड देन जैसे ही मेरे साथ आपकी बात होती रहेगी विल फील कि आप आपके मम्मी डैडी के कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए बचा रहे हैं इंजीनियर बनने की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होने के। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं संतोष टकले आपसे विदा लेता हूँ। एंड नाउ द चार्ज विल बी टेकन केयर बाय शंकर सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you so much for your kind words. Good evening, everyone. I hope my voice is clear enough. So I just want to Yes sir, nothing will respond for first 2-3 lectures of yours and every teacher। तो आप वो हाथ वगैरह उठा सकते हैं बट विल नॉट अलाउ, क्योंकि शुरुआती दौर में जब तक अपना एक 50-60 बच्चों का कोर टीम सेटल नहीं होता तब तक आप
Maharashtra is a capital of, sorry, my bad. Mumbai is the capital of Maharashtra. Every equilateral triangle is an equiangular triangle. A natural number is an integer. So these are the examples of statements, and we know that any assertive sentence is which can be true or false, but not simultaneously. Then it will be considered as a statement. So we will see some examples of the sentences which are not statements. So first one is, please give your pen. So this doesn't states any fact. This statement does not give any fact. So that's why it will be considered as a not statement. There are few more examples. What is your name? It will not have a definite value. It will not have a definite answer. Everybody has a different name, and we are not sure as to whom the question is directed to, right? So there's no fixed value. There's no true or false value for this. So this will be considered as a not statement. So there are few more examples, and there's a note given in the bottom. It says that interrogative, exclamatory, command, order, request, suggestion. So these kind of sentences are not statements, but someone might put 0 in place of x, someone might put 1 in place of x. So the value of x can x. So the value of x can varies, right? It can vary person to person. So in this case, the answer will not be true all the time. So this will not be considered as a statement. Again, the second example is he is tall. So we don't know the context. We don't know like what this sentence is talking about. Let us say I am a 5 feet tall. Okay, someone of 4 feet comes in and says that yeah, he is tall. So in that case, the statement is true. The sentence is true. But let us say someone comes in who has a 6 feet of height, then I will be shorter for him, not tall, right? So again, this is not a definite. These are not facts. So such kind of sentences are considered as open sentences. Okay, so the result or the values for such sentences can vary person to person. So in this case, these are called as open sentences, and open sentences will not be considered as statements. So I hope that everybody is clear with what exactly is a statement. Any statement which gives a fact, it may be true or false. It is not necessary that it should be true. It may be true or false. If it gives a fact, then it will be called as a statement. And if any sentence which is interrogative, exclamatory, command, order, request, suggestion, or if it is an open sentence, which means its result or value may change person to person, in that case, we will consider it as a non-statement, or it is not a statement. Okay. So which of the following sentences are statements in logic? Write down the truth value of the statement. So since we have already seen such kind of example here, right? So this is the example, which is a statement 5 into 2 is equals to 11. So 6 into 4 is 24, but it is given as 25 here. Although the value is incorrect, the truth value of this sentence will be false, and it is considered as a statement. Second example is x plus 6 is equals to 9. So again, the value of x may change person to person, and the results also differ. There's no fixed results for result for this sentence. So this will not be considered as a statement. Third one is, what are you doing? It's a interrogative statement, interrogative sentence. So it will not be a statement. Then we have this, the quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equals to 0 has two real roots. So if you solve this quadratic equation, you will find roots of the equation, and those will be real. So this gives us some fact, and it will be considered as a statement. Fifth one is not a statement. It's a request. Then sixth one, moon revolves around the earth. This is a fact. This is a factual sentence, so it will be considered as a statement. Seventh one, every real number is complex number. It's a statement. He is honest. It will not be considered as a statement, because its definition of honesty may change person to person. We do not have a definite or a factual result for this, right? So that's why this will not be considered as a statement. Eighth one, and the last, ninth one, the square of a prime number is prime number. Now, this is also a statement. Why this is a statement?
Because see, let us consider a prime number. Let's consider 11. So, or any prime number. Okay, and we'll square it. So not necessarily every prime number square will be prime number. It may or may not be. Okay, but if I ask you to find out the prime numbers, the value or the results or the facts will be same for all. The results will be same, right? Prime numbers will be same. Their squares will be same. It is not necessary the square of prime number is prime number. It may or may not be true. Again, the result will be true. Okay, someone is entering the meet. Okay. So I hope that everybody is clear with what is a statement and what is not a statement. So we will see logical connectives, simple and compound statements. So the word or phrase which is used to connect two statements are called logical connectives. So we have 5 logical connectives here: and, or, if then, if and only if and not. So how many logical connectives we have? 5. And, or, if then, if and only if, and the fifth one is not. So what is the definition of simple and compound statement? Let us say there are 2 or more sentences combined with a connective. So in that case, or we can separate a sentence into 2 different sentences or a separate sentences. In that case, we will consider it as a compound sentence. So see, 3 is a prime number and 4 is an even number. So these 2 sentences are connected with and we can separate it. 3 is a prime number can be a different sentence altogether, and 4 is an even number. This can be a different sentence. So out of one sentence, we are separating it into 2, so it will be considered as a compound statement. The simple statement would be the one that cannot be separated into 2. Okay, so this is a simple statement. This is a compound statement. We will learn more about the logical connectives. So I would again request everyone to please have your notebooks with you at this point of time, because if you don't have it, you will be confused and you will not understand the things henceforth. Okay, so first one is conjunction. So conjunction is a connective. Conjunction is a connective. So if 2 statements are combined using the connective and, then it is called as a conjunction. In other words, P and Q are 2 statements. Then P and Q is called as a conjunction. It is denoted by P, the symbol, and Q. Okay, so the symbol is called as wedge. I will denote it as a upwards pointing arrow. So P, and I will read it as P conjunction Q, or P and Q. So this is how we read this particular equation. So the conjunction P and Q is said to be true if and only if P and Q both are true. So for conjunction, we have a truth table. So what exactly is a truth table? P and Q, these are 2 statements. We have 2 statements. Okay, so it can be true or false. P can be true, Q can be false, both can be true, both can be false, or P can be false and Q can be true. Okay, so what we are doing here is we are giving all possible inputs, and then we are finding their conjunction and their results. So this is called as a truth table. So we verify the inputs and outputs. So we give inputs and then we verify the outputs. So this is P and this is Q statement. Okay, so both statements are true. Both P is true, Q is false. P is false, Q is true, and both are false. So in this case, what would be the result? So P and Q, or P conjunction Q, इसका result क्या होगा? So if P and Q दोनों statements अगर true है, so in this case the conjunction would be true. The result would be true. If any of the statement is false, see यहाँ पे एक statement false है, Q false है, यहाँ पे P false है, यहाँ पे दोनों false है, right? So दोनों में से अगर एक भी या फिर दोनों भी false है, so in that case the result would be false. Okay, when will be the result true? It will be only true when both the sentences are true. Okay, so to just simplify this truth table, I just want to give you an analogy. I would say कि see यहाँ पे T की जगह पे आप 1 मान लीजिए, ठीक है? True की जगह पे आप 1 मान लीजिए, T is equals to 1 and false is equals to 0. So
ये इजी होगा ट्रूथ टेबल रिमेंबर करने में, ठीक है। कैसे? नाउ एंड इज कंसिडर्ड एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, okay, so see, t is 1, q sorry, p is 1, q is 1, 1 into 1 is 1, so the result is 1, that is t, right? So अगर यहाँ f की जगह पे हम 0 रखते हैं, right, so t is 1, f is 0, so the result will be 0. Are you getting it? So for f we are getting 0, and for 1 we are putting it here. For t we are putting 1. Okay, so and operation is basically considered as a multiplication operation. This is just for remembering the truth table. You don't have to solve problems like this. Okay, this is the truth table that you need to remember. This is just I'm giving an extra bit to remember the truth table, or to find out the truth table if you don't remember it. Okay, so this is conjunction. Conjunction is basically, you can consider it as a multiplication operation when we are considering t as a 1 and f as a 0. And this is the truth table that will be very much important when we solve problems. Okay, so you need to remember it, or you need to remember the trick to figure it out. Second one is disjunction. So what is disjunction? Disjunction can be considered as an addition. Okay, so everything will be same. Okay, see, again we have two statements, p and q. We are giving the inputs. What are the inputs? Both statements can be true. P can be true, Q can be false, P can be false, Q can be true, and both statements can be false. So in this case, we are going to find the results. The results would be P or Q, or P disjunction Q. This is how we read it. P or Q, or P disjunction Q. So if both the statements are true, then the result is true. If one of the statement is true, so here it is true, here it is true, so in this case also the result would be true. And if and only if we have both statements false, so in that case the result would be false. So if you see, this is quite similar to conjunction, wherein if we have one statement as a false, okay, अगर दोनों में से कोई भी एक statement false है या फिर दोनों statement false है, so in that case we were getting result as a false. But in this case, अगर हमारे पास एक भी true है, तो see, यहाँ पे true है, यहाँ पे true है, और यहाँ पे तो दोनों भी true है. So in this case, we are getting the result as true. Okay, so we compare it with multiplication. We will compare our operation with addition. ठीक है? तो हमने t के लिए 1 consider किया है and false के लिए 0 consider किया है. ठीक है? So t plus t, that is 2 plus 2, 1 plus 1 is 1. या अभी ये लॉजिकली है, मतलब 1 plus 1 अगर आप करोगे तो मैथमेटिकली इट विल बी 2. ठीक है? सो 1 plus 1 will be 1 in a logical way. लॉजिक में 1 plus 1 1 0 1 होता है. 10th. ओके, सो दिस इज डिसजंक्शन. यहाँ पे आपको दो ट्रूथ टेबल ध्यान में रखना ही है, दिस वन एंड these are very easy truth table to remember. Then we have third connective, that is conditional or implication. If then. So if then is denoted like this. Again, we have two statements. P, if P then Q. We will read it as if P then Q. Or it will also denoted as P implies Q. ठीक है, it is again have a truth table. अब इस truth table में see, we are giving the same inputs as in we are giving all possible inputs. So these are the inputs that are possible. मतलब एक तो दोनों statements true हो सकते हैं, या फिर दोनों false हो सकते हैं, या फिर दोनों में से एक true हो सकता है, एक false हो सकता है, and other way around. ठीक है? So in this truth table, if you see, is there a message? Okay, so somebody, so can we have an example of disjoint functions? Okay, you mean to say you mean to say about this disjunction, right? Yeah, we will have an example. Just allow me to finish all these connectives, and then we will jump on to the examples, if that is okay. Okay, so in conditional, now I will directly give you the. Oh. Shankar sir, I want to
Hello, Shankar sir, is it Yes, audible? sir. Yeah, Yeah. yeah. So you are audible. Yeah. See, that's okay. See, my duty is to whatever message I am getting, I am pushing it. But for students, बच्चे लोग आपको स्टूडेंट्स आपको एक चीज मैं बताता हूँ. कुछ शुरुआत के लेक्चर्स में आपके सवाल जो है वो आपको आपके डायरी में सर ने जैसे बोला वो एक्यूमुलेट करने हैं. मैं बीच में इंटरफेयर सिर्फ एक चीज के लिए कर रहा हूँ. अभी मुझे एक मैसेज फिर से आया कि सर मेरा ये चैप्टर अच्छे से हो गया है तो मैं लीव कर सकता हूँ क्या. 101% आप कुछ चीजें समझिए. कुछ बच्चे हैं 2072% बट सिंसियर नहीं है. कुछ 90% है बट सिंसियर नहीं है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है 60% वाले बट सिंसियर है. तो हम जाएंगे उसी तरीके से जिससे एवरेज टू अब एवरेज बच्चों को कंसेप्ट समझे. फिर एक बार एमसीक्यू में चले गए तो वहां पे कंसेप्ट सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड समझाया जाएगा. आपका पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक का सारा फंडामेंटल एक प्रॉब्लम के लिए नहीं समझाया जा सकता. तो अगर आपका वक्त कहीं और अच्छी जगह यूज नहीं हो रहा है तो आपको ये लेक्चर जो सर जिस तरीके से बेसिक से जा रहे हैं वो समझ के लेना है. आपको मालूम नहीं होगा बट जो सर बता रहे कंजंक्शन डिसजंक्शन ये सारी चीजें आगे जाके आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो एंड गेट और गेट ऐसे कुछ ना कुछ फॉर्म में आपके सामने आ ही जाएंगी. बट अभी आपको कुछ मालूम नहीं है तो जो चीजें सर बोल रहे हैं उसको समझो, दिमाग में पक्का फिट कर लो. गलती से समझने में कुछ गलती हो जाए तो जब आपका माइक वगैरह ऑन करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तब आप उस डाउट्स को सर के सामने रखिए. आज की डेट पे सिर्फ और सिर्फ उसको नोट करके रखिए. आप बिल्कुल इस तरीके से हिलिए मत कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई बोलेगा सर सब कुछ समझ में आ रहा है तो छोड़ दूं क्या. कभी कभी आप इतने छोटे हो और समवेयर अराउंड 10 ईयर्स सॉरी 15 ईयर्स 16 ईयर्स डबल ट्रिपल एक चीज करने से वो चीज ज्यादा गहराई से समझ में आती है. सो डोंट लूज अननेस डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. सर आप थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी इस्तेमाल करिए ताकि बच्चों को अचानक ये ना लगे कि अंग्रेजी के कारण समझ में नहीं आ रहा. सो ऑल आर कंफर्टेबल विथ हिंदी सो इंग्लिश तो बोली है बट यू कैन रिपीट दैट बीट इन हिंदी. गो बीट स्लो and I think you are going wonderfully well. Thank you so much. Please go ahead. ओके सर, थैंक यू. ओके, सो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देख रहे थे. एंड इन दिस इफ यू सी अगेन द इनपुट्स आर सेम. इनपुट तो यहाँ पे सेम ही है. इनपुट सारे ट्रूथ टेबल के लिए सेम ही रहेंगे, सिर्फ आउटपुट चेंज होगा. ठीक है. सो फॉर दिस ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन वी हैव रिजल्ट एज अ फॉल्स ओनली व्हेन वी हैव क्यू एज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे P ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है. इन दैट केस ओनली we have a result as false. अगर ये वाइस वर्सा होता है, मतलब if P is false and then Q is true, so in that case also we have a result as true. ठीक है, ये चीज रिमेंबर करनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. We only have a result as a false जब P true हो और Q false हो. So this is truth table for conditional or implication. Then we have biconditional. तो see conditional के लिए जो symbol है, this is मतलब P और Q की तरफ एक पॉइंट करता हुआ एरो है. ठीक है, इट हैज ओनली वन हेड. यहाँ पे बाय कंडीशनल में वी हैव लाइक एन एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स P एंड Q, दोनों की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट. सो दिस इज अ डिफरेंस इन देयर सिंबल्स. सो इट विल बी रीड एज P कंडीशनल Q और P इफ एंड ओनली इफ Q. ठीक है. तो इसका जो ट्रूथ टेबल है इसमें देखिए, अगर दोनों इनपुट्स सेम है, दोनों इनपुट सेम है, इट मे बी ट्रू और फॉल्स. दोनों इनपुट सेम है, इफ इट इज ट्रू ट्रू और इफ इट इज फॉल्स फॉल्स, इन दैट केस द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू. एंड इफ मतलब दोनों इनपुट्स सेम नहीं है, डजंट मैटर कि P और Q सेम नहीं है, मतलब एक ही होता है, राइट. सो इन दैट केस यू विल हैव रिजल्ट एज फॉल्स. ठीक है. आई विल रिपीट ऑल दिस ट्रूथ टेबल्स वंस अगेन. Okay, so let me just erase this. That it will be, yeah. तो कंजक्शन के लिए हमने ट्रूथ टेबल देखा. इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन द आउटपुट इज ट्रू, एल्स इट इज फॉल्स. सिमिलरली डिसजंक्शन के लिए हमने देखा रिजल्ट इज ट्रू इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू. अगर दोनों इनपुट फॉल्स है, इन दैट केस ओनली वी हैव फॉल्स एज आउटपुट. कंडीशनल में या फिर इंप्लीकेशन में हमने देखा
कि we have false as output only when P is true and Q is false. बाय कंडीशनल में हमने देखा कि अगर दोनों इनपुट सेम है या फिर दोनों स्टेटमेंट सेम है P एंड Q, सेम इन द सेंस कि आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों भी ट्रू है या फिर दोनों भी फॉल्स है, इन दैट केस वी हैव आउटपुट एज ट्रू, एल्स वी हैव आउटपुट एज false. And the last connective is a negation of statement, which means अगर P हमारा true है तो negation of P will be false and vice versa. मतलब अगर P false है तो negation of P would be true. So see, this is how we denote negation of P, and it is read as like the negation of P. देखो यहाँ पे, see, this is the symbol, like this is how we denote. Now this was the base. So यहाँ तक जो हमने देखा, it was all basic. Okay, अभी इसके ऊपर हमें अगर ये चीजें हम like if we remember all these things clearly, our concepts are clear, so in that case like we will be able to solve the questions very easily. There's one more note given here. Negation of a statement is the statement itself. What does that mean? Key negation of negation of P, so it will be P. I don't know whether I'm reading this correctly or not, but you can see it. See, this is negation of P and its negation, so it will be P, right? Now let's start with the examples. We will start with basic examples as to how we denote the statements in the with the help of symbols. So the first statement here is 2 is an odd number, sorry, 2 is an even number and 25 is a perfect square. So see, we have statement this as P, 2 is an even number. ये हमारा पहला statement हुआ, and second statement is Q is equals to 25. ये हमारा दूसरा, sorry, Q is a statement which is 25 is a perfect square. So 2 is the even number is first statement, Q is second statement, that is 25 is a perfect square. So यहाँ पे हमने इस इन दो statements को and connective से जोड़ा है. So for and we have this symbol and we write it as P and Q. Similarly, a school is open or there is a holiday. A school is open is one statement. सेकेंड वन इज देयर इज ए हॉलीडे, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ. और यहाँ पे सिंस हम और यूज कर रहे हैं तो वी विल यूज दिस सिंबल. ठीक है, श्रीलंका इज इन इंडिया, सॉरी, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा हुआ दिल्ली इज इन इंडिया, दैट इज पी, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ढाका इज इन श्रीलंका. नाउ सी, यहाँ पे हमें दिया है ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, लेकिन हमने क्यू स्टेटमेंट क्या लिया है, ढाका इज इन श्रीलंका. तो हम इसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी तो एज इट इज रहेगा, मतलब दिल्ली इज इन इंडिया, वो स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगा. सिंस वी हैव बट और वी हैव एंड हियर, राइट. तो क्यू स्टेटमेंट हमारा है ढाका इज इन श्रीलंका. सो हमें क्यू का निगेशन करना पड़ेगा. निगेशन करेंगे तो क्या होगा, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी एंड negation of Q. Similarly, 3 plus 8 is greater than or equal to 12 if and only if 5 into 4 is less than or equal to 25. So these two statements are connected with connective if and only if, and we know the symbol for if and only if. This is the symbol, right? So this is how we represent the statements in symbolic form. Now we will go a step further, a step ahead. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, write the truth values of the following statement. मतलब हमें दो statements दिए जाएंगे P, Q. ठीक है, we have to figure out which is P, which is Q. We again have to find out the connective, कि इन दोनों के बीच में connective क्या है. और then we have to also identify कि P true है या फिर false है. Similarly for Q, true है या false है. And उन दोनों के बीच में जो connective है उसके मतलब उस कनेक्टिव को हम देखेंगे एंड कंपेयर इट विद द ट्रूथ टेबल दैट वी हैव, और ट्रूथ टेबल की मदद से हम यहाँ पे रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे. लेट मी शो यू हाउ. तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, दिस इज 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए रैशनल नंबर. 3 is a prime number and 4 is a rational number. 3 is a prime number is a P and 4 is a rational number is Q. ये दो स्टेटमेंट्स हुए. तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है 3 is a prime number, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, या फिर इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो है T. 4 is a rational number, it is also a true statement and its truth value is T. ठीक है, तो P
और Q दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू है वो T है, एंड यहाँ पे कनेक्टिव जो यूज हुआ है दैट इज एंड, राइट। सो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे। नाउ टेल, ओके ओके, सी we have P as true, Q as true, and we have connective as AND। ठीक है, मतलब दोनों इनपुट या फिर दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है वो ट्रू है, एंड हमारा कनेक्टिव जो है वो एंड है। तो इन दिस केस आवर truth value of the complete statement will be true. Sorry, T and T is equals to T. So if you can see the truth table again here for conjunction या फिर and, so both inputs are true, then the conjunction would be true only. So this is how we solve it. Second, all flowers are red or all cows are black. First statement is this: all flowers are red. Second statement is this: all cows are black, and the connective is or. Okay, so the first statement is false. All flowers are red. It might be a statement, but it is not true. Its truth value will be false. There are white flowers, or there are number of flowers. Like there are different colors of flowers, right? So all flowers are red is a false statement. Its truth value is false. Similarly, for all cows are black, not necessary all cows are black, right? So दोनों statements यहाँ पे false है. See, Q is false, P is false, और यहाँ पे जो connective है वो है or. So F, that is first statement. Second statement is also false, F, and we have connective as a or. So the result would be F. Again, ये result कहाँ से आया? F और F is F again from the truth table. So देखिए यहाँ पे अगर मैं go back to the disjunction, and if I see if the both inputs are false or both statements are false, in that case the disjunction of those would be false only. Okay, so this is how we figured out the result. Okay, let me show you few actual examples now. Okay, so I'll skip these two, the third one and the fourth one. I'll give you more logical example now. First of all, we'll read this. If statements P, Q are true and R, S are false, determine truth values of the following. तो यहाँ पे मुझे solve करना पड़ेगा, ठीक है। Now P जो है वो मेरा true है, right? Okay, I will write it as P and Q both are true. P and Q both are true, and R and S are false, right? So यहाँ पे अगर मुझे पहला स्टेटमेंट है इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. Okay, so let's go step by step. Negation of P. So this is P. P is true. Negation of true is false. I'm writing it directly. Okay, negation of true is false. Then this, and then I have Q. What is the value of Q? That is T. Q is T, right? Sorry, it has to be written as T. Then we have R and negation of R. R is false. Negation of false would be true. So I will write it as true. Okay. So see, F and T or T. मतलब यहाँ पे हमारा डिसजंक्शन है, ठीक है. T और T अगर दोनों इनपुट T है, so in this case the output would be T. So F and the output is T, right? So F and T. तो अगर AND में या फिर कंजंक्शन में दोनों में से एक स्टेटमेंट अगर false रहता है, so we get output as a false, right? So this is what is solved here also. I hope you are getting it कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे P की जगह पे मैंने T रखा, P का निगेशन था तो F किया, T का निगेशन F हुआ, सिंबल एज इट इज. Q का वैल्यू रखा, Q का वैल्यू T था, रख दिया. देन R, निगेशन ऑफ R का वैल्यू रख दिया. यहाँ पे R था फॉल्स, R का निगेशन होता है ट्रू, दैट इज T. देन आई सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट, ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया. सो T और T इट वुड बी T ओनली, एंड F एंड T दैट वुड बी F. This is how we solve this one. Okay, so let me take few MCQs. Okay, I have collected few MCQs for you. I will share that slide now. Please let me know once it is visible to you.
Okay, I believe yeah, it is visible. I can check myself also. Yes, Okay. sir, it's visible. Okay, sir. Thank you. Okay, so the first question is Reshma is hardworking. That is the first statement. Reshma is successful. That is the second statement. Then the verbal form of negation of P and negation of Q is. तो हमें यहाँ पे पहले तो P का negation करना है. P is a statement. Okay, P is a statement in which we say Reshma is hardworking. So negation of P जो रहेगा that would be Reshma is not hardworking. ठीक है, this would be Reshma is not hardworking. Then we have Reshma is successful as a second statement. तो इसका negation अगर हम करेंगे तो it would be Reshma is not successful. ठीक है, मतलब Reshma is not hardworking and यहाँ पे जो symbol है this is for and. Reshma is not hardworking and Reshma is not successful. So if you see these four options, if the correct answer would be this: Reshma is not hardworking and she is not successful. So this would be the correct answer. Fourth one. I hope it's clear. Second is the statement negation of P. Wait a second. P, and it is called as biconditional. Yeah, the P biconditional negation of Q is. So यहाँ पे first option is tautology, second is a fallacy, third is equivalent to P by conditional Q, and fourth one is equivalent to negation of P by conditional Q. So since we have not seen the topic tautology or fallacy, these two options goes out of picture, right? So these are not the options to be fair here. तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट है, आइदर दिस और दिस. फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल ऑप्शन. तो कैसे करेंगे, सी पी क्यू, तो यहाँ पे मैं इसका भी ट्रूथ टेबल निकाल लेता हूँ. निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल negation of q. ठीक है, so it will be true, 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 false, false, true and false, false, right? So अभी मेरा p true है, true, and negation of q होता है f. q यहाँ पे मेरा t है, so negation of q is f. so p by conditional q. तो इसमें हमने देखा है बाय कंडीशनल में अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू सेम है, सेम वैल्यू है, सो इन दैट केस आल्सो, इन दैट केस ओनली. सो यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार आपको बाय कंडीशनल वाला ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ. ठीक है, ये बाय कंडीशनल में अगर दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज आइदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, they are true, but if one of the statement is false, then, और अगर दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, so in that case our result would be false. So यहाँ पे P is true, negation of Q is false, so P by conditional, sorry, T by conditional F would be F, that is false. ठीक है, अभी false, negation of false, it would be T. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T. सिमिलरली अभी हम ये तो निकाल रहे हैं, ठीक है, हम इसका भी निकाल लेते हैं साइमल्टेनियसली. P बाय कंडीशनल Q. ठीक है, तो बोथ आर ट्रू हियर. तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो बाय कंडीशनल हमारा P ही आता है. देन वी हैव P एज ए ट्रू, Q एज ए फॉल्स. यहाँ पे मैं P ट्रू लेता हूँ, Q फॉल्स लेता हूँ, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, बोथ आर ट्रू. सो ट्रू 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 बाय कंडीशनल ट्रू इज ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, राइट? तो यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा. क्यों फॉल्स आएगा? बिकॉज बोथ आर नॉट सेम, मतलब दोनों का भी जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम नहीं है, एक का ट्रू है एक का फॉल्स है, सो दोनों का जो नेगेशन आता है वो डायरेक्टली फॉल्स आता है. लेट्स टेक द थर्ड वैल्यू, द थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज. तो मेरा p यहाँ पे f है, फॉल्स है, q मेरा ट्रू था तो नेगेशन की वजह से फॉल्स हुआ. फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स इज ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स. अगेन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, सो बाय कंडीशनल जो है वो डायरेक्टली फॉल्स रहेगा. नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज एज फॉल्स, फॉल्स, so my p is false here.
Q is false, but because of negation it becomes true. So P by condition T by conditional F, sorry, F by conditional T, F by conditional T would be F only. Okay, wait, yeah, I sorry, my bad. So F by conditional T would be F and negation of F would be T. यहाँ पे दोनों इनपुट्स सेम ही है, या फिर दोनों ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम ही है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज ए ट्रू. तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें दिया था, राइट, उसके जो रिजल्ट्स हैं और जो ऑप्शंस में हमें अवेलेबल है पी बाय कंडीशनल क्यू, ये जो दोनों रिजल्ट्स है तो ये दोनों मैच कर रहे हैं. कैसे मैच किया हमने? ट्रूथ टेबल की मदद से. So this option must be correct. Now if you find out this like truth table for this, so this will not match. ये वाला जो truth table है इसके truth table के साथ में match नहीं करेगा. So that's why this will not be the right option. Since we got the answer in the first step itself, so we will not cross check for this. Okay, so maybe we have very less time. This will be the last example, I guess. Let's discuss this. So if P, Q are true statements and R is a false statement, then which of the following statement is सर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बदल नहीं रहा है. okay? मतलब लास्ट स्टेट मुझे, हाँ अभी बदल. तो पिछला जो आपने R&D किया सब वो हमको देखने नहीं मिला. मुझे लगा आप ओरली बता रहे हो. जस्ट रिपीट दिस एंड देन विल क्लोज अगेन, क्योंकि ये Okay, उनको दिखा ही नहीं होगा ऐसा मुझे लगा. okay, the सबको last one दिखा मालूम नहीं. नहीं सर, मैंने शेयर नहीं किया था. I was not sharing this slide, so I have to reiterate it again. Okay, okay. Yes. Okay, so I'm really sorry. I forgot to switch the tab sharing. So I will again reiterate this example only before going to the next example. So this is the question, the statement. This is equal to, and we have these four options. Since we have not seen tautology and fallacy, these two options go out of picture. We have third and fourth as option. So one of that will be one of that will be correct, and the other one will be false. So how do we verify that? Again, we have to, we should be able to find out the truth table. How do we find out the truth table? These are the input values, P, Q. We will give it these values. Is someone speaking? Someone should speak. Ma'am, so someone is speaking, or shall I continue? No, you please continue. Sorry, my mic was on. Apologies. No problem. Okay, so I will erase this again and I will do it again. Okay, so we want to draw a truth table for this problem. How do we do that? See, I have P here, Q here, and this is the question that we have. P by conditional negation of Q, and this is the first option that we have, P by conditional Q. Okay, for PQ we have true, 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 false, false, true, and false, false, right? So if now let us say both the values are same, that is both are true. In this case, if both are true, then this will be true. If both are false, then this will be false. If one of them is like both are not same, then it will be false. So this is the truth table for F by conditional Q that we have seen already, and you people were seeing it for like maybe 5 minutes when I forgot to share my screen. So this is the truth table for biconditional. Now this is the question that we have. We have to put in the values of P and Q and then find out the result. Now I will put P as a T here and Q as a T here. So P is T and negation of T is F. So T biconditional F, T biconditional F, that will result into F, and negation of F would be T. Okay, so I just put these values into this and solve it. Now I will again put these values into this. I will draw it here. So see, T की जगह पे P की जगह पे मैं यहाँ पे T रखता हूँ by conditional as it is. Negation of Q, Q मेरा F है, तो negation of F होता है
t bracket close and इसका मुझे negation करना है. Now since both the values are true by conditional true is true and negation of true is false, तो यहाँ false. Similarly if you find this out will be false and it will be true. मतलब इसका जो हमने truth table find out किया, the truth table of this question matches with the third option from the options that we have, right? So see, true true, false false, false false and true true. So which means the third is the correct option. Okay, so it is 8:30 only. So shall I continue, sir, or shall I stop here? Sir, we will stop here. It's raining heavily in Panvel region and thunderstorm. So at least class could be continued. That is very nice. Your lecture was very good, and I learned many things because I didn't touch this topic since long. So I am happy. Thank you so much. Boliye, sir. Okay, so no, I was not speaking, sir. No. Then we will stop here if you allow. Yes, sir, sure, works. We'll stop. Okay. हाँ, so आप अपना अगला लेक्चर मुझे मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए. बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आप बिल्कुल मायूस मत होइए. क्या होता है, शुरुआती तौर पे ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है. एक ही चीज चाहिए, लगे रहना. मतलब आपको अगर 2025 में देना है तो भाई अगले 4-6 महीने के लिए लगे रहना है. 26 में देना है तो 1.5 साल है. 1.5 साल में तो आप 101% बहुत सारी चीजें सीख ही जाएंगे. So keep posting me your feedbacks, but please don't leave class. Tell your good friends in